I would go to the beach with you this weekend. बट सिंस अब इसका मतलब आप चूँकि इट्स एन अनट्रू कंडीशन, तो आप इसके इन्फर ये कर रहे हैं कि सिंस आई डोंट हैव टाइम सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव यू ऑन बीच विद मी. So that's how you will infer the meanings out of it. कि it's not true conditions, but you are referring to something to be happen either in the present or future time. तो आपने इसको इस तरीके से mention करना है. Second example हम देखते हैं. He would tell you about it if he were here. So but he is not here, so he will not be able to tell you about it. So that's how you will infer कि अब would आपके पास आ गया है, which is a auxiliary model. इसके बाद आपने सिंपल वर्ब फॉर्म टेल मेंशन करनी है, और इसी तरीके से आपने इफ़ के बाद ही वर हियर. सो सिंस ही इज़ नॉट हियर ही वुडंट बी एबल टू टेल यू. इट्स आर नॉट ट्रू कंडीशंस, इट्स एन अनरियल कंडीशंस. एग्जाम्पल नंबर 3, इफ़ ही डिड नॉट स्पीक सो क्विकली यू कुड अंडरस्टैंड हिम. But how you'll infer the meaning out of it? He speaks very quickly. As a result, you would not be able to. You can't be able to understand it at all. So that's how you will infer the unreal conditional sentences. सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर आपने